Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dear students, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट है इसका सेकंड, 3y स्क्वायर is equal to y into y minus 5। इसको हमने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसके बाद हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 5y। 3y square minus y square plus 5y is equal to 0. 3 minus 1, 2y square plus 5y is equal to 0. फिर y कॉमन लेते हैं हम, यहाँ से बच जाएगा 2y plus 5 is equal to 0। अब इन दो का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो यहाँ से हम बारी बारी दोनों को इक्वल टू 0 लिखेंगे। y is equal to 0 और 2y plus 5 is equal to 0। Here y is equal to 0 and 2y is equal to minus 5 and y is equal to minus 5 by 2. The solution set will be equal to 0 and minus 5 by 2. Now, this was the second part of question number 2. अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट 4 है x स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। x स्क्वायर minus 11x is equal to 152. This is part 4 of question number 2. For factorization, we have to arrange it in standard quadratic form. X square minus 11x minus 152 is equal to 0. If you multiply 152 by 1, the answer is 152. We have to factorize it. 1 into 152, 2 multiplied by 76 and 4 multiplied by 38 and 8 multiplied by 9. These are the factors of 152. Now we have to find the two numbers from these factors कि उनको जब हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए और माइनस का 11 आना चाहिए। We see that ये दो नंबर जो हमें 11 दे सकते हैं। x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेते हैं, x माइनस 19, इधर से x कॉमन 8 कॉमन लेते हैं, x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। x minus 19 and x plus 8 is equal to 0. Now अब हम इनको बारी बारी इक्वल टू 0 रखेंगे और हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आती है 19 और इधर से x की वैल्यू आती है 8। The solution set is minus 8 and 19. Now we have its fifth part. We have to solve its fifth part. Part 5, question number 2. Exercise 1.1 ही चल रही है। x plus 1 over x plus x over x plus 1 is equal to 25 over 12। सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है।
तो हम इसका एलसीएम लेते हैं x into x plus 1 by dividing this term by this we have left only term x plus 1 and this x plus 1 multiplying after x plus 1 square plus अब ये कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने से x मल्टीप्लाई होगा x के साथ x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ओवर 12 स्क्वायर बोल दें इसका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर इन्हें मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25 ओवर 2 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 over x square plus x is equal to 25 by 2. After cross multiplication we get 25x square plus 25x is equal to 24x square plus 24x plus 12 is equal to 0. 25x square minus 24x square 25x minus 24x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हमने तमाम टर्म्स को इस तरफ शिफ्ट कर दिया है तो ये x स्क्वायर बचेगा प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन के फैक्टर बनाते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 12 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो ये 12 आता है 12 के फैक्टर्स 1 into 12 2 into 6 3 into 4। अब हमने इसमें से वो फैक्टर्स लेने हैं जिनको आपस में सॉल्व करने से प्लस 1 आता हो तो 4 and 3 gives 1 x square plus 4x minus 3x minus 12 is equal to 0। x कॉमन लेते हैं यहाँ से x plus 4 minus 3 common x plus 4 is equal to 0 x plus 4 common x minus 3 is equal to 0 x plus 4 is equal to 0 and x minus 3 is equal to 0 x is equal to minus 4 and x is equal to plus 3। we have the answer of this question 3 and minus 4। this is the solution set of this given equation। Allah Hafiz।